Are you revising the things which Yes, sir. we are doing in the Yes, class? sir. Yeah, that will be better because this subject is not theoretical subjects, and here most of the things we are doing needs practice. Regular practice or a continuous practice is required. And if there is any doubt, you can ask in the next class so we can clear the doubts, particularly till that we are understanding the fundamentals of fabric structure. So don't hesitate to ask any question. Even we can repeat. If a very small topic is there, we can repeat it also. So try to get maximum whatever we are doing in the class. So again, we will discuss a few things which may again repeat. But today we will try to do it in a more systematic manner. So just to show you the hill frame, a rough idea about the hill frame, I have taken front view of the hill frame. Here the hill frame is indicated. A group selection. Hill frame is a device which is selecting a number of ends together. So it is selecting the ends in a group. Means if 500 ends are passing through one hill frame, and when it is lifting, all the ends will get lifted. So whenever group selection is required, whenever group lifting is required, we are using hill frames, and hill frames are used for tappet and Dobie shading mechanism. So tappet and Dobie shading mechanism works on the principle of group selection. And whenever we require individual selection, means one individual thread, one single thread has to be lifted and lowered in its separate manner, then we are using this Jacquard mechanism, in which you can see lifting and lowering of individual end is done. So you can understand the Jacquard mechanism like that one heeled wire is there. And this heeled wire can be operated separately. Here you can see in the diagram we have indicated 4, but it is number hundreds or thousands heeled wires may be there in one heel frame. This heel frame is a unit, it's a frame which is having this type of structure. And here number of wires are suspended according to our requirement. So depending on the view or depending on the draft, we are selecting the required heel frame or selecting the number of heeled wires. We are calculating the number of heeled wires required in a heel frame for a particular design, for a particular view. And whenever we are changing the view, the draft will get changed. And whenever we are changing the draft, number of heeled wires and number of heel frames and number of heeled wires in each heel frame will be calculated. Number of heel frames will be decided according to view, and number of ends passing through each heel frame. If 4 heel frames are there, 1 से कितने पास हो रहे हैं, 2 से कितने पास हो रहे हैं, 3 से कितने पास हो रहे हैं, 4 से कितने पास हो रहे हैं. The number of ends passing through each heel frame can be calculated. The number may be equal or may be unequal. चारों heel frame से same number भी पास हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि same हो, unequal भी हो सकते हैं. For example, first heel से 1000, second heel से 1000, third heel से 500, fourth heel से 500. If total 3000 ends are there, that may be also the case. So different cases we will study in the coming classes, then it will be more clear. So just at this time, at this point of time, I want to make clear that what is a heel frame so that you can understand how the number of ends lifted and lowered together. And also here this line, these lines are indicating ends. This is end number 1 passing through first wire of this heel frame. End number 2 passing through second wire of the same heel frame. End number 3 passing through the third wire of same heel frame. End number 4 is passing through same wire of the fourth wire of the same heel frame. So just to differentiate between group selection and individual selection, we have taken these two diagrams. And from this diagram, it should be clear that how the heel frame looks and how it works and how the ends are passing through that. So you can see every wire is having heeled eye. One opening is there, a small opening is there through which the end is passing, and this wire. So this wire is known as heeled wire, and this
is known as end, and this small I is known as hilled I, and this complete frame is known as hilled frame, which consists of number of hilled wires, and number of hilled wires depends on V. Then another diagram, figure 1.3, is indicating types of interlacing, which already we have covered, but not in a very systematic manner. So just to make it more clear, I have taken these diagrams so that you can understand the whole topic which we have covered previously in a systematic manner. At the first part of the diagram is indicating warp over weft, and that's why this warp is a continuous line. This vertical line, this vertical space is indicating warp. This horizontal space is indicating peak. Vertical lines indicate ends. Horizontal spaces indicate peaks. So here you can see the warp is a continuous, the end is continuous, and the peak is not a continuous line or continuous space. It means it is below and this is above. And that's why this interlacing is known as warp over weft, or in short, we say warp up. Similarly, interlacing type B, it is, you can see weft is a continuous line. So weft under warp under weft, warp नीचे है weft के, इसका मतलब weft over warp है, और इसको हम बोलते हैं weft up. So and these warp over weft or warp under weft or weft over warp are known as a unit of fabric. This is the smallest unit of fabric. So this is indicating one unit, and these units are combining in different manners and resulting in different weaves. So to produce any weave, we are combining these two types of interlacings in a particular manner or in a required manner. So how the interlacings are shown by using the diagram that is indicated in figure 1.3, and that should be clear. Now, just to elaborate it, or just to make it more clear, we have taken one example of weave in which two ends are there and two peaks are there. In this design, you can see two vertical lines are there, starting from left, moving to the right. So first line is indicating first end, second line is indicating second end. Similarly, first horizontal line is indicating first peak, and second horizontal space is indicating second peak. Line or space, both are the same thing. So ends are indicated vertically and peaks are indicated horizontally. Ends, we start from left and we move towards right. As the number of ends are increasing, we are moving towards right. So you can see here, one, here two ends are there. So we have two lines. Here we have four ends, so 1, 2, 3, 4. If you have 8 ends, you will move towards the right. So leftmost is the first end. And similarly, peak-wise, the bottommost is the first peak, then second. Similarly, here first, second, third, fourth, depending on the ends and peaks in the repeat. So in the example given at A is having two ends and two peaks in the design or view. Example B is having 4 ends and 4 peaks in the design. So this design is having this view repeat unit. This is a view repeat unit, which is having 2 ends and 2 peaks. And this is having 4 ends and 4 peaks. But both are same. Here we have taken 4 repeats of this one. This is repeating 4 times here. You can see this 1, 2nd, 3rd, and 4th. So the same design is repeated 4 times into 4 cross 4. Yes. Before taking this figure 1.5, I would like to take first theory part. Methods of view presentation or fabric presentation. So you just take the note that what the topic we are covering. Otherwise, I will share these slides. So there is no need to note down the things which is taken into slides. Slides I will share. But whatever I'm speaking that I will not be able to share. So sometimes if you feel that it is important, you can note down. You can stop me. You can ask me to stop and you can note down. So methods of view representation means what are the methods we are using to represent a view on paper? How we can represent a view? A view means it's a representation of fabric. So you can say methods of fabric presentation. Both are the same thing. So a view is the interlacing pattern of warp and weft. That definition already we have taken. A view is the order of interlacement of warp and weft. A view is a pattern in how the warp and weft are interlacing. 2 kinds of interlacings are possible. One is warp
over weft, which is also known as warp overlap, in which warp is above weft. Warp ऊपर है, warp overlap करता है, इसलिए warp overlap बोल रहे हैं इसको. It is the same thing, warp up or warp over the weft. Different terminologies are used, so don't get confused. Warp over weft, warp is above weft, warp overlap or warp up, all are the same thing. And second type is weft overlap, in which weft is above warp. जिसमें weft ऊपर होगा warp के, इसको हम बोलेंगे weft overlap type of interlacing, or in simple manner we can say weft up type of interlacing. So two types of interlacing, warp up and weft up. When the warp is lifted above the inserted weft, a warp overlap is obtained. To obtain a warp overlap or warp up type of interlacing, what we have to do? We have to lift the warp. We have to lift that particular end. And the end can be lifted by lifting the heel frames. That we have already cleared. When the warp thread is lowered, the weft thread is inserted. When the warp thread is lowered at the time of insertion of weft thread, above the warp thread and the weft overlap is obtained. जब warp अगर नीचे है, जब weft insert हो रहा है, तो उस समय जो interlacing बनेगा वो होगा weft overlap और weft up. ये हम already समझ चुके हैं. अगर किसी को अभी भी confusion है, they can ask the question, how we obtain warp up type of interlacing and how we obtain weft up type of interlacing. I think it is clear. There are two practical methods of view representation. दो method generally हम use करते हैं. However, there is another one, third method is also there, but most of the time we are using two methods. What are those methods? One is known as linear method, another is known as canvas method. In simple manner, linear method is also known as interlacing diagram method. You can note down because it is not mentioned in the slide. Linear or interlacing diagram method. Second one is canvas or graph paper method. Canvas, इसको हम graph paper method भी बोलते हैं. अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. Linear or interlacing diagram method, and second one is canvas or graph paper method. The linear method is indicated here. This is linear method, and this is canvas method or graph paper method. This is linear or interlacing diagram method. Interlacing diagram इसलिए बोल रहे हैं, डायरेक्टली हमने यहाँ पे interlacing शो कर दिया है, जबकि यहाँ पर हम ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं, इंटरलेसिंग डायरेक्टली शो नहीं कर रहे हैं. इसको हम बोलते हैं कैनवास और ग्राफ पेपर मेथड, बिकॉज वी आर यूजिंग ग्राफ पेपर हियर. सो इन द फर्स्ट मेथड, linear method, which is indicated here, don't get confused, this is indicated later and this is indicated first, but first the paragraph is indicating about this, explaining about this. So in the linear method, each warp thread is represented by a vertical line. यहाँ पे 4 वर्टिकल लाइन दिखा रखी है हमने, 1 2 3 4. लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट है, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, तो टोटल 4 एंड्स यहाँ पे शो किए हुए हैं. एंड ईच वेफ्ट थ्रेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मींस फर्स्ट पिक, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन मींस सेकंड पिक, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन मींस थर्ड पिक, फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन मींस फोर्थ पिक. So here we have 4 ends and 4 picks. The point of intersection of lines corresponding to a warp overlap is marked by the dot, but in this case, we are not using any dot. A continuous line is indicating warp up, or a continuous line of weft is indicating weft up. So just there is a slight change because this is given in the book, but we are not using dots here. Here you can see the first line, first end is a continuous line on the first peak. It means here warp up type of interlacing is there. Second end, first end interlacing with second peak. Here you can see the line is broken and weft is a continuous. It means here we are getting weft up. Here again warp up, here weft up. Second end on first peak, here weft up. When the second end intersecting with second peak, weft up is taking place. Sorry, warp up is taking place. When the second end intersecting with third end, third peak, weft up type of interlacing is formed because weft is continuous. And then here, end number 2 intersecting with or interlacing with fourth peak, here we are getting
warp up. Similarly, third end is same as first end and fourth end is same as second end. So in this way, warp up and weft up can be indicated on paper, and this is known as linear method or interlacing diagram method. And though this is a simple method, it is seldom used. बहुत कम use होता है because the designer has to draw plenty of horizontal and vertical lines, which is time consuming. इस तरह की lines आपको बनानी पड़ेगी और कहाँ पर continuous करना है, कहाँ पे break करना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. So it will consume more time and chances of mistakes are more. That's why this method is rarely used or it is seldom used. So then we prefer the second method. In the canvas method or graph paper method, a square paper or graph paper is used. और एक graph paper हम use करते हैं इसके लिए, on which each vertical space represents a warp thread. You can see here we have 4 vertical space. First vertical space, second vertical space, third vertical space, and fourth vertical space. So first vertical space indicates first end, second vertical space indicates second end, third vertical space indicates third end, and fourth vertical space indicates fourth end. Each horizontal space represents a weft thread. First horizontal space, first peak, second horizontal space, second peak, third horizontal space, third peak, and fourth horizontal space, fourth peak. So vertical space indicates ends, horizontal space indicates peaks. Each square, ये वर्टिकल एक स्क्वायर ये बन रहा है, फिर दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, ऐसे कई सारे स्क्वायर्स यहाँ पे बन रहे हैं. टोटल 16 स्क्वायर्स आर देयर इन 4x4. Each square therefore indicates an intersection of warp and weft thread. हर स्क्वायर जो है वार्प और वेफ्ट का इंटरसेक्शन शो करेगा, क्योंकि ये पूरा स्पेस जो है एंड को शो कर रहा है, ये पूरा स्पेस पीक को शो कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट एंड है और ये फर्स्ट पीक है. इन दोनों से जो स्क्वायर बन रहा है फर्स्ट एंड और फर्स्ट पीक से, ये पहले फर्स्ट एंड का और फर्स्ट पीक का इंटरसेक्शन पॉइंट शो करेगा. So each square therefore indicates an intersection of warp and weft thread. To show the warp overlap, यानी कि वार्प अप को शो करना है, तो स्क्वायर इज फिल्ड इन और शेडेड. जहां पे हमें वार्प अप शो करना है वहां पे या तो हम कोई मार्क लगा देंगे, या तो उस स्क्वायर को हम पूरा फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे, या उसको शेडेड कर देंगे, या वहां पे हम कोई मार्क कर देंगे. या मार्क है या शेडेड किया हुआ है या फिल्ड किया हुआ है, इसका मतलब वहां पे वार्प अप है. वार्प अप के लिए हम फिल्ड करते हैं या शेडेड यूज करते हैं, या हम क्रॉस या डॉट कुछ भी, सर्कल कुछ भी यूज कर सकते हैं. एंड द ब्लैंक स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, सो ब्लैंक स्क्वायर इंडिकेट्स दैट द वेफ्ट थ्रेड इज प्लेस्ड ओवर द वार्प, मींस वेफ्ट अप, वेफ्ट ओवरले. सो वार्प अप के लिए हम कोई भी मार्क करते हैं या उसको फिल्ड करते हैं सॉलिड, या उसको हम शेडेड कर देते हैं, बट वेफ्ट के लिए हम उसको खाली रख देते हैं. वेफ्ट अप है तो खाली, ब्लैंक मींस वेफ्ट अप, any mark is there or shaded is there, it means it is warp up. So warp up is indicated by a mark, weft up is indicated by a blank. Several types of marks may be used to indicate the warp overlap, but the cross mark is most commonly used. जैसे हमने यहाँ पे cross से show किया हुआ, तो generally हम mostly हम cross use करते हैं. These are the two methods. Most widely used method is the graph paper method, because we consume less time, we require less labor, and it is more clear. By observing the diagram in first sight, you can have the idea what type of design is there, and it is very easy to construct. Due to all these reasons, this canvas method or graph paper method is preferred over linear or interlacing diagram method. So sometimes in the examination question may be asked, which method of representation of view is used or preferred and why? So you have to answer these 3-4 points, and then by giving these 3-4 points with the help of example, you can answer the question. One more method is given in some books, that is indicated here. You can understand by this. Like this is interlacing diagram method. जो वहाँ दिखाया हुआ वही interlacing diagram method यहाँ पे दिखाया. This is for 2 ends and 2 peaks, and this is for 4 ends and 4 peaks. Similar view, the same view is converted here at C.
C is indicating another method of representation of view in which we are using two letters. This is also constructed on graph paper, so this is also graph paper method. So graph paper method is having two parts. Graph paper method can be used in two ways. In the first way, which is indicated here, we use letter A for warp up and letter B for weft up. You can use any letter, P and Q, X, Y, whatever the letter you can use. One letter for warp up and one letter for weft up. Here you can see here A, where the end number 1 and pick number 1 are intersecting. A is indicated. It means here warp up. End number 1, pick number 2 पर B indicate किया हुआ, इसका मतलब यहाँ पर weft up है. यहाँ पर again A warp up है, ये weft up है. Second of end first pick weft up, warp up, weft up, warp up. तो similar जो ये यहाँ view है, वही view हमने यहाँ पर indicate किया by using two letters on graph paper. And this one is graph paper method, which already we have taken. We are filling the squares. So in the previous math, जो पहले एग्जाम्पल लिया उसमें क्रॉस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फिल कर रहे हैं पूरा. तो पूरा फिल भी कर सकते हैं, स्क्वायर को शेडेड भी कर सकते हैं, या कोई क्रॉस या सर्कल या डॉट भी इंडिकेट कर सकते हैं. ग्राफ पे इस मेथड में आप कोई भी क्रॉस कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्रॉस को प्रीफर करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द डिजाइन वी विल स्टडी in coming days or in coming lectures. We will use cross and blank, and this is known as graph paper. Second type of graph paper method. Is there any question related with this topic? Methods of view presentation. Sir, picks or ends हमेशा जरूरी है कि same ही हो, equal numbers में? No, it is not essential. It is not essential. तो फिर square नहीं होगा? Yes, it is not essential. The view may be square or may be rectangle. But triangle नहीं होगा, that is sure. Triangle नहीं होगा, है ना? Like 4 ends and 4 peaks हैं तो square होगा, but 4 ends और 2 peaks हैं तो 4 cross 2 का rectangle बनेगा, और 2 ends और 4 peaks हैं तो vertical rectangle बनेगा 2 cross 4 का. तो हम कुछ examples जब आगे लेंगे तो आपको clear होगा. A view may, in a view, number of ends and peaks may be equal or unequal. We will take 3 conditions of view repeat unit. The first condition is in a view, number of ends and peaks per repeat may be equal or may be unequal. If it is equal, it will result in a square size. If it is not equal, it will result in a rectangular size. Clear? Yes, sir. Any other question? सर वो जो ऊपर आपने डायग्राम से शो किए तो उसमें जो मतलब डबल लाइन एक वो आपको शो कर रही है क्या? यस, थोड़ा और क्लियर करने के लिए, अदरवाइज मैंने एक डायग्राम यहाँ भी लिया, आप देखिए ये वाला, इसमें सिंगल लाइन लिया है, तो आप सिंगल लाइन भी ले सकते हैं, डबल लाइन थोड़ा और क्लियरिटी के लिए लिया हुआ ये डायग्राम. डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट मैथ तरह के लेफ्ट में भी डबल लाइन शो हो रही है ये. यस, डबल लाइन. ये पूरा जो 2 लाइन है ये फर्स्ट पिक है, ये 2 लाइन है जो सेकंड पिक है. ये डिफरेंशिएट करने के लिए इसको शेडेड कर दिया और इसको खाली छोड़ दिया. वार्प और वेफ्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए वार्प को हमने शेडेड कर रखा और वेफ्ट को हमने ब्लैंक छोड़ रखा. बट ये दोनों लाइन मिलके पहला पिक बन रही है, दोनों लाइन मिलके दूसरा पिक बन रही है, दोनों लाइन तीसरा पिक बन रही है और ये दोनों लाइन चौथा पिक बन रही है. तो डबल करके शो किया ताकि और क्लियरिटी हो, आपको दिखने में अच्छा लगे और इजी हो आपको, इसलिए. अदरवाइज यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, जो यहाँ पे शो किया हुआ, इट इज मोर इजी. तो आप ये भी शो कर सकते हैं. ठीक है? यस सर. Anything else? Okay, so also we have less time now, so we'll try to cover a small topic again. View repeat unit. Already I have taken, so just I will repeat. If you have any question, you can ask. The repeat of a view is a quantitative expression of any given view. किसी भी view को quantity के according जब हम represent करते हैं तो हम उसको बोलते हैं व्यू रिपीट यूनिट. यानी कि 4 एंड्स 4 पिक्स व्यू में हम जनरलाइज रखते हैं उसका. जब उसको हम पर्टिकुलर एक रिपीट में ले लेते हैं, क्वांटिफाई कर देते हैं, तो हम उसको व्यू रिपीट यूनिट बोलते हैं. इट इंडिकेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स. मैंने लिखवाया, लगभग सिमिलर डेफिनेशन है. द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सिमिलर डेफिनेशन. इट इंडिकेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स फॉर ए गिवन व्यू. It comprises of warp and weft repeat. इसमें वार्प का रिपीट भी आएगा, वेफ्ट का रिपीट भी आएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है 4 ends and 4 peaks.
The size of the repeat may be even or uneven depending upon the nature of the view. यानी कि आप 2x2 भी ले सकते हैं, 3x3 भी ले सकते हैं, 4x4 भी ले सकते हैं, 5x5 भी ले सकते हैं. साइज जो है इवन ऑड कुछ भी हो सकता है. इन एलिमेंट्री व्यूज सच एज, एलिमेंट्री यानी कि बेसिक व्यूज जो है सच एज प्लेन, 12, साटिन, ये 3 बेसिक व्यूज होती हैं जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. द रिपीट साइज इज नॉर्मली इवन. जो रिपीट साइज होता है उसमें वार्प और वेफ्ट एंड्स और पिक्स इवन होते हैं. यहाँ इवन का मतलब दोनों इक्वल, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है. हाउएवर इन व्यूज सच एज हनीकॉम्ब, हकाबेक, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड व्यूज जो हम बाद में पढ़ेंगे. द रिपीट साइज में बी इवन और अनइवन, यानी कि एंड्स और पिक्स जो है इवन भी हो सकते हैं और अनइवन भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं. फॉर एनी व्यू द रिपीट साइज इज द सम ऑफ द वार्प एंड वेफ्ट फ्लोट्स. वार्प और वेफ्ट फ्लोट्स को हम जोड़ देते हैं तो आपको साइज मिल जाएगा. जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो साइज हो गया 4x4. फॉर एनी व्यू द रिपीट साइज इज द सम ऑफ द वार्प एंड वेफ्ट फ्लोट्स. Thus, in case of 2 up 1 down 12, अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, if you are taking 2/1 or 2 up 1 down 12, the repeat size is 3x3. क्योंकि 2 up 1 down का मतलब हुआ 2 times warp up, 1 time weft up. तो वार्प के 2 फ्लोट है, वेफ्ट का 1 फ्लोट है, दोनों के फ्लोट को ऐड करेंगे, 2 + 1 that is 3. तो रिपीट साइज निकल आएगा, व्यू रिपीट यूनिट का साइज निकल के आएगा, that will be 3x3. In this way we can obtain the size, we can decide the size of the view repeat unit by adding the warp up and weft up given in the design. It is common practice to denote one repeat of a view on design paper. Commonly, generally हम एक ही repeat, एक one repeat को ही हम indicate करते हैं ग्राफ पेपर पर या डिजाइन पेपर पर. जैसे यहाँ पर आप देखिए हमने 4 बार रिपीट किया है. छोटा सा ये जो है 2x2 यही रिपीट हो रहा है. तो अगर इसको हम सही प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें तो 2x2 में बनेगा. बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट and more clearly we have taken 4x4. We are repeating the same thing. 2x2 को हम यहाँ रिपीट किया, 2x2 यहाँ रिपीट हो रहा है, 2x2 यहाँ रिपीट हो रहा है. तो ऐसा भी हम जनरली उसको और क्लियर करने के लिए बढ़ाते हैं. अदरवाइज आप यहाँ देखिए 2x2 में ही किया हुआ है इसको, बट यहाँ इसको और अच्छे से दिखाने के लिए 4x4 किया. बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज द मिनिमम साइज, दैट इज 2x2 इन दिस केस. नाउ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ वूवन डिजाइन, ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं तो थोड़ा फास्ट लेंगे. The 3 basic elements in a woven design are design or view, second is draft or drawing plan, third is peg or lifting plan. ये तीनों हमने कल जस्ट मैंने डेफिनेशन आपको डिक्टेट भी करवाई थी, इसलिए अभी लिखने की जरूरत नहीं है. The design indicates the interlacement of warp and weft threads. The view is the order of interlacement of warp and weft threads in the repeat of the design. It is made up of a number of squares which constitute the repeat size of a design. The vertical direction of the squares indicates the, sorry, there is a mistake in the book. The vertical direction of the square indicates the ends and the horizontal direction indicates the peaks. So correct it. A blank in a square indicates that a warp goes below the corresponding weft and cross mark in the square indicates that the warp floats above the weft. Cross show करता है warp ऊपर है, blank show करता है weft ऊपर है. The draft, ये हो गया view के बारे में. Second is the draft or drawing plan indicates the manner or the order of drawing the ends through the hilled eyes or hilled frames, and it also denotes the number of hill shaft required for a given view repeat unit. तो आपको ड्राफ्ट को देख के 2 चीजें मालूम पड़ेगी. एक तो उसमें नंबर ऑफ हिल फ्रेम्स कितनी रिक्वायर्ड है और दूसरा कौन सा एंड कौन सी हिल फ्रेम से पास हो रहा है. द चॉइस of the type of drafting plan depends upon the type of fabric woven. किस तरह का ड्राफ्टिंग प्लान लेना है वो फैब्रिक पर डिपेंड करेगा, कौन सा फैब्रिक हम बना रहे हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग सिस्टम वी विल स्टडी लेटर ऑन. द थर्ड डेफिनेशन, द थर्ड एलिमेंट ऑफ फैब्रिक स्ट्रक्चर इज द पैग और लिफ्टिंग प्लान. It provides useful information to the viewer. It denotes the order of lifting of hill shafts. You can say lifting and lowering of hill shaft, but in some cases we are only lifting the hill frames, we are not lowering. So bottom line is automatically formed and top line is formed by lifting. In a peg plan, the vertical spaces indicates the hill shafts. Yeah, here new thing is there. The peg plan
In a PEG plan, the vertical spaces indicates the hill shafts and the horizontal spaces indicates the peaks that I will again explain. The PEG plan depends upon the drafting plan. In the case of a straight draft, the PEG plan will be the same as the design. Hence, no PEG plan is necessary in the case of straight draft. That we will take later on. At this stage, it will be difficult to understand. The design, draft and PEG plan are illustrated with the aid of an example shown below. Here, तीनों चीजों को यहाँ पे show किया हुआ है by using graph paper method. Design or weave is indicated here. Drafting plan is indicated here and PEG plan is indicated here. अब इनमें व्यू में, ड्राफ्ट में, लिफ्टिंग प्लान में क्या दिया हुआ उसके बारे में नहीं सोचना आपको. अभी आपको ये देखना है कि इनकी लोकेशंस क्या होगी ग्राफ पेपर के ऊपर. ग्राफ पेपर अगर आपने व्यू या डिजाइन को यहाँ लोकेट किया है तो ड्राफ्ट बिल्कुल इसके ऊपर होगा और लिफ्टिंग प्लान इसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होगा. दिस इज डिजाइन और व्यू. दिस इज लोकेशन. डिजाइन गलत. यस, पार्डन सर डिजाइन गलत है. नो, आप ये मत देखो गलत है ना सही. आप ये मत देखिए गलत सही, अभी मत देखिए उसको. मैंने बोला ना आप अभी इसमें क्रॉस और ब्लैंक है उसको मत देखिए. आपको किसने बोला कि ये टू अप डाउन लिया है? अच्छा, नीचे लिखा हुआ है इसलिए आप देख रहे हैं. ओके, गुड, आपने सही नोटिस किया. यहाँ पर एक क्रॉस होना चाहिए डिजाइन में. ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं आप. But at this time, actually, my focus is not on a design, correct or wrong, just to clear the locations. कहाँ डिजाइन होता है, कहाँ ड्राफ्ट होता है, कहाँ ग्राफ पेपर पर कहाँ पे लिफ्टिंग प्लान को हम इंडिकेट करते हैं. Now we have less than 1 minute, so हम इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करेंगे. जस्ट आपको लोकेशन क्लियर होना चाहिए. अगर व्यू हमने यहाँ लिया है तो ड्राफ्ट इसके लेफ्ट या राइट में या कहीं साइड में नहीं आएगा. ड्राफ्ट बिल्कुल इसके ऊपर आएगा और लिफ्टिंग प्लान या पेग प्लान जो है बिल्कुल इसके साइड में पैरेलल आएगा. ये आपको क्लियर होना चाहिए, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड. अभी आप देखिए इसका फर्स्ट एंड और इसका फर्स्ट एंड एक लाइन में आ रहा है, सेकंड एंड एक लाइन में आ रहा है, थर्ड एंड ड्राफ्ट के और डिजाइन के एक लाइन में आ रहे हैं और ये भी एक लाइन में आ रहा है. सिमिलरली फर्स्ट पिक इससे मैच कर रहा है, सेकंड पिक इससे मैच कर रहा है, थर्ड पिक इससे मैच कर रहा है, फोर्थ पिक इससे. यानी कि व्यू और ड्राफ्ट में एंड्स कॉमन है तो एंड्स कॉमन मैच कर रहे हैं और लिफ्टिंग प्लान और व्यू में अगर पिक कॉमन है तो पिक्स फर्स्ट पिक, सेकंड पिक,